So turn your cameras on and then we will start. I have started the focus mode, so you don't need to worry. Your videos will not be getting recorded properly. Deborah, just waiting for you. Okay. Please write here, guys. Aldehyde and ketones are miscible in water. Miscible means soluble in water. In water, as they can form hydrogen bond, with water. Now, you don't need to worry that how it is going to form hydrogen bond with water. Please see here. Okay? Each and every carbonyl compound will have something like this, C double bond O, with lone pairs on oxygen here. And water has a formula which is HOH. Now, please see here. Don't write anything, try to understand here. This hydrogen, it is connected with an electronegative element, that is oxygen. It's connected with an electronegative element, that is oxygen. So this will be having delta negative, this will be delta positive. There will be interaction between the lone pairs of oxygen of carbonyl and the hydrogen of water. So this is the hydrogen bond which is getting formed. And because there is a hydrogen bond between the carbonyl carbon and the water molecule, the carbonyl carbons will be soluble in water. That is why they are soluble in water. Okay, that's one point. Next point, it is similar to as we have seen in alcohols also, solubility decreases on increase in number of carbon atoms in alkyl groups. So there will be alkyl groups attached here and here, right? So if I increase the number of carbon atoms in alkyl group, then obviously the solubility is going to decrease. Fine, please see. This is the portion responsible for, please see here, this is the portion which is responsible for the solubility of the carbonyl compounds, aldehyde and ketones. Only this portion, right? The oxygen which is there. The alkyl group, it is not doing anything for the solubility. So all the alkyl group, these are what? These are hydrophobic. And that means these are what? Not soluble in water. This portion is not soluble. If you remember from your 10th standard, no? If you remember soap formation, soap is how? You have long chain fatty acid and then you have COO negative, Na positive, right? So this particular portion is hydrophilic. This is hydrophobic. Kuch yaad aa raha hai aap log ko? You guys remember? Hai na? Similarly, here also what do we have? We have here this portion, it is hydrophilic, that means oxygen portion, and the rest of the carbon atoms which are having CH3, CH2, these are hydrophobic. They are not doing anything for the solubility of water. That is why if I increase those CH3, CH2 and everything, solubility is going to decrease. Please write this down.
Why are you guys so late, Fadil and Safiya? Yes, sir, I had some network issues. Sorry, sir. Okay, what about you, Safiya and Aliza? क्या हो गया? Why are you guys so late? Sir, it was a prayer time here. Extremely sorry, sir. Um, at what time is Maghrib, Safiya? 6:40 something, sir. And class starts at 6:30, right? Yes, sir. Okay, guys, please take a screenshot. Those who have just joined, please take a screenshot. Rajita and Deborah done. Rajita, आपका हो गया? चलिए. Now, right, next point regarding the boiling point. Boiling point of aldehyde and ketones are higher than non-polar hydrocarbons. Non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers. ठीक है? So obviously, why? Because as they are as aldehyde and ketones are polar molecules. So since aldehyde and ketone, these are having dipole moment. So the dipole, there will be dipole-dipole interaction, and that is why their boiling point is greater than non-polar hydrocarbons and very weakly polar ethers. Yeah, I just saw. You just start from here. Don't worry, Pia. ऊपर का छोड़ दीजिए, हम दिखा देंगे आपको लास्ट में. अभी आप यहीं से देखिए, boiling point से देखिए. अच्छा, you want to take a screenshot? Take a screenshot. Take a screenshot. But why are you, Pia? नमाज पढ़ रहे थे आप भी? Okay. Why are you late though? अच्छा, ठीक है. Boiling point of aldehyde and ketones are higher than non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers, as aldehyde and ketones are polar molecules. Next point, please write. Due to absence of hydrogen bond, in aldehyde and ketones, their boiling point is lower than alcohols. So, what is the first paper, Fia? Also, guys, Safiya and guys, turn your camera on. ना ये बोलने की क्या जरूरत है? I hope you all know by now. Yes, Fia, Fadil, Aliza. Yes, so on, sir. ठीक है? Because we don't have any hydrogen bond in aldehyde and ketones, their boiling point is lower than alcohol. Rajita, any doubt in here? No, no, ठीक है. No doubt. Even you saw the first point regarding solubility. Look at the first. That's fine. Okay, ठीक है. Due to the absence of hydrogen bond in aldehyde and ketones, their boiling point is lower than that of alcohol. So you will write a question now. And the previous parts regarding the boiling point is still valid. As we increase the branching, the boiling point will decrease. As we increase the number of carbon atoms, the boiling point will increase. All of these things are still there. Okay. Now please arrange the following. Arrange the following in increasing order of
boiling point. We have here CH3CHO. This is your A molecule. You have CH3, CH2OH. This is your B molecule. Then you have CH3, OCH3, C molecule, and then you can write CH3, CH2, CH3. This is your D molecule. Okay. So first of all, we will classify. This is aldehyde. This is alcohol. This is ether. This is what? Alkene. So aldehyde, obviously, it is what? It is strongly polar. This is very important piece here. Okay? This is strongly polar. Alcohol will have hydrogen bonds. Ether is weakly polar. Alkane is non-polar. Okay. So obviously, if I talk about the intermolecular forces of attraction, hydrogen bond will be having the largest magnitude of the intermolecular forces of attraction. That is why B will boiling point, followed by strongly polar aldehydes, that is A, followed by weakly polar ethers, that is C, and then followed by the non-polar alkenes, that is D. I hope if you guys have data, please let me know now. I will explain it, but we are doing boiling point comparison from haloalkane, so I hope it is clear by now. But if someone is seeing this for the first time, they have some issues here, they don't understand what is happening, please let me know. I will explain it for them. All of you understood this? Rachita, Safia, Fadil, Pia, your camera is still not on. Yes, sir. Okay, fine. What happened, Pia? Pia, Aliza, and Deborah. Aliza, what happened? क्या हुआ? Last class में तो आपने कहा था. Next class से. What, sir? Your video is not on. What, sir? We have to turn on the video. हाँ, you I was have to turn on absent in the- last class. अच्छा, आप absent थे last class में. Pia, sir, I am using. फोन को आप ऐसे रख के यूज कीजिए ना. अच्छा, लिख रहे हैं आप, लिखिए. Yes, Aliza, you have to turn the video on. Okay, sir, 2 minutes. Okay. Achha, just a confirmation. Rachita, you cannot see anyone else's video, right? Except mine. Raise your hand once you're done writing. Fadil, you're writing. Yes, sir. Deborah, okay. Aliza, Fia, and Fadil is right. Please write it down. Raise your hand once you're done. All of you done? Fia? Yeah, you're still writing. If Fia is writing, no problem. All of you guys, please write next. That is chemical reaction or chemical properties. Yeah, are you done? बताइएगा अगर if you are not done. Please hear me. Now, in chemical properties, first of all, we will look at nucleophilic addition reaction. Please write number A. Nucleophilic addition reaction. I will give you a general idea about nucleophilic addition reaction, then we will look at the specific reactions. Okay? So first of all, please keep your
pen aside and listen here. Don't write anything. Try to understand what is happening. Okay. First of all, we will take a carbonyl compound. So carbonyl compound will have carbon. Please don't write anything. Double bond oxygen. Now between carbon and oxygen, which is more electronegative? Between carbon and oxygen, which is more electronegative? Guys, tell me. Mic on करके जल्दी बताएं. Which is more electronegative? बोलो भाई, जल्दी बोलो. रजिता, सफिया, फादल, अलीजा. Carbon and oxygen. Which? हाँ, very good. Oxygen is more electronegative. So अरे कुछ response नहीं है, ऐसा लग रहा है. Oxygen आप is. लोगों ने. हाँ, ठीक है. So oxygen will pull the electrons, yes or no? What will happen? Oxygen will Yes, sir. pull the electrons. That will get a negative charge, delta negative. Correct, guys? Oxygen will get delta negative, and carbon will get. Carbon को क्या होगा? Positive. Delta positive. Delta positive. अलीजा बोलिए, आप नहीं बोलिएगा तो समझ में नहीं आएगा. बात समझ में आ रही है आपको अलीजा? Yes, sir. हाँ, माइक ऑन करने के लिए. और रजिता आप भी. ठीक है? यस रजिता. ऐसे ये अभी तो यस सर बोल दीजिए, अभी भी मुंडी हिला. हाँ चलिए. Yes, So now what is nucleophile will have what? Nucleophile will have negative charge और positive charge, ये बताइए आप. हाँ अलीजा आपका कैमरा ऑन है, ठीक है. हाँ जी बताएं. न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच या फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर. टेल मी गाइस. इलेक्ट्रॉन रिच और पुअर नहीं पता. न्यूक्लियोफाइल. अच्छा ठीक है. अच्छा एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, दोस्त हु आर टर्निंग देयर वीडियोस ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम. अलीजा यू आर ऑन योर फोन और लैपटॉप? Sir, laptop. लैपटॉप में है, ठीक है. लैपटॉप में आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा. कैन यू क्लिक हियर अलीजा? यहाँ पे ये जो ऐसे एरो है ना, वहां पे क्लिक कीजिए. Yes, sir. Then उसके बाद वहां पे ब्लर माई बैकग्राउंड में क्लिक कर दीजिए. blur. Okay. ठीक है. अब कुछ पीछे हो हमको. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके अलीजा, आपको ऐसे Okay, लड़ाई sir. झगड़ा करने की जरूरत नहीं. ठीक है. यहाँ देखिए. So here we have carbonyl carbon and here we have nucleophile. Nucleophile का मतलब थोड़ा समझिए. Nucleus. Correct है guys, all of you? Nucleo means nucleus. Sir, is it electron rich? हाँ, correct ना, very good. Why it is electron rich? Because it is nucleus loving. What charge is present in the nucleus? What charge is present in the nucleus? बोलो भाई. Negative. Nucleus. अरे negative charge होता है nucleus में. Sorry. No charge, sir. नो चार्ज. अरे क्या ही हो गया. 12वीं कक्षा. माइक ऑन करके सबको जल्दी आंसर देंगे. जल्दी आंसर देंगे आप लोग. माइक ऑन रखें. ऐसे ज्यादा सोचने से क्या होता है ना, गलत आंसर आता है. बिना सोचे आंसर देंगे. रजिता, अलीजा, ऑल ऑफ यू टर्न योर माइक ऑन. पिया, फादिल है ना, डेबोरा, ऑल ऑफ यू टर्न योर माइक ऑन. सफिया है ना, ठीक है. रजिता माइक ऑन. So I'll just answer quickly. I will. You just answer quickly. ठीक है. What is the charge on electron? सबको बोले. इलेक्ट्रॉन. Negative. इलेक्ट्रॉन भाई. Negative. इलेक्ट्रॉन. Negative. क्या इरादा है? हार्ट अटैक देने का इरादा है सफिया आपको? हाँ. इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज? टेल मी गाइस. इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज? Negative. Negative. प्रोटॉन पे क्या चार्ज? व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? Positive. Positive. एंड वेयर कैन वी फाइंड प्रोटॉन? एटम में कहाँ पे होगा प्रोटॉन? ऐसे बाहर या फिर बीच में? बीच में. बीच वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. Nucleus. Yes. हाँ ठीक है. तो न्यूक्लियस इज हैविंग प्रोटॉन, सो न्यूक्लियस विल बी व्हाट चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव चार्ज. अच्छा. और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस. बोलो. Nucleus. न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, तो उसको प्यार कौन करते हैं? उसके पास दौड़ के कौन जाएगा? कौन सा चार्ज? Negative charge. पॉजिटिव चार्ज के पास दौड़ कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज ना. तो दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. याद रहेगा. एंड वी शो इट लाइक दिस. ठीक है.
Nucleophile, it is going to attack on the carbon atom, something like this. Why it is attacking on carbon atom? Because carbon is delta positive, nucleophile is negatively charged. So it is electron rich. So from electron rich to electron poor, there will be attack. Now what will happen? As soon as nucleophile is attacking on carbon, it wants to make a bond with carbon. So carbon will say, I already have 4 bonds. Carbon already has 4 bonds now. All of you can see. दिख रहा सबको? Yes, sir. दिख रहा है ना? ठीक है. So nucleophile will say, I am coming with sigma bond. You break one of your weak pi bonds. So carbon will say, हाँ ये भी बात सही है. So one of the weaker pi bond gets broken, and this kind of equilibrium, जब mechanism लिखिएगा तो इसको equilibrium में भी आप show कर सकते हैं. ठीक है, but अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. आप लोग उतना ज़्यादा familiarize नहीं है equilibrium से. In organic chemistry, I am writing it like this. Now what is going to happen? The carbon will be here. The 2 bonds which were already present, that they also will be there as it is. The oxygen, it is receiving an electron, so it will be negative, and here we will be attaching nucleophile. Is this clear? Yes or no? Please tell me यहाँ तक. Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज बस ध्यान दीजिएगा. I don't know whether you remember or not. When carbon has one double bond, it is sp2 hybridized. ये आपको पता है? And when Yes, sir. carbon have all the 4 single bond, it is what hybridized? sp. क्या hybridization होगी? When carbon has only. हाँ रजिता बोलिए. माइक तो आपको तो माइक ऑफ करने की जल्दी रहती है. sp3 very good है ना? It is sp3. So the hybridization is going from sp2 to sp3. This is present in your NCERT. Generally CBSE ने कभी यहाँ पे गौर नहीं किया था, but recently they have uploaded a sample paper. वहाँ पे उन्होंने ये सवाल पूछा हुआ है. ठीक है ना? I have mentioned it. Otherwise आप लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए. From sp2 to sp3 it is getting hydrolyzed. Sorry, hybridization is getting changed. And here we are having, then we will add H plus. As soon as we will add H plus, the oxygen is going to attack on the H plus like this, and the complete nucleophilic addition reaction is completed like this. Here we will have OH, and here you will have nucleophile. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Nucleophilic addition. Yes. So why it is addition reaction? Because pi bond is breaking, and there are 2 new bonds. Carbon nucleophile bond is a new bond. Oxygen hydrogen bond is a new bond. So there are 2 new bonds, and only 1 pi bond is getting broken. So it is an addition reaction. Now this addition reaction is starting from a nucleophile. That is why it is nucleophilic addition reaction. Please write this down. Let me know once you're done. पिया, आपका कैमरा नहीं ऑन हुआ है अभी तक. What happened? Is everything all right? पिया, ये समझ में आया आपको? पिया, Priya, you understood till here? Huh? You did not. Can you repeat? नहीं Priya, ऐसे repeat तो हम नहीं करेंगे. You turn your mic on and tell me कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया. हम एक चीज पूछ रहे थे ना. That is why I ask all of you guys to keep your camera on. आपको दिखना तो चाहिए प्लीज ना, क्या समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा. It was breaking. Keep your mic on, तभी तो आपको समझ में आएगा. Otherwise कैसे समझ में आएगा? I understand. ठीक है भाई, आप माइक ऑन करें. Oh, Priya, what happened? Can't turn the mic on also. Yes, sir. You understood till here, na? Nucleophile will attack on carbon. Oxygen is having delta negative. Carbon is having delta positive. Nucleophile will attack. Then the pi bond will break because nucleophile wants to make a bond with carbon. Carbon will say, I already have 4 bonds. So the weakest bond will break. Got it? Yes, sir. बस वही हो रहा है ना, और कहाँ कुछ हो रहा है. देखिए, here I have also identified just one thing, that here the carbon is sp2 hybridized, here the carbon is sp3 hybridized. That you can see because carbon has double bond. Whenever carbon has double bond, it will be sp2. When carbon has only single bond, it will be sp3. After that, we add H plus. That means we add water in the presence of acid, and the O negative will attack on H plus and get OH. ठीक है फिया? Yes, sir. ठीक है. After this, you will write the first reaction. This is a class of reaction. We will look at many nucleophilic addition reactions. उसमें सबसे पहला लिखिए addition of ammonia. And its derivatives.
addition of ammonia and its derivatives. Now, in this, first of all, I will tell you about the reaction of ammonia. Ammonia is NH3 and carbonyl compound. Okay, first of all, we will look at ammonia, then we will generalize something for the ammonia derivative. Please see here, don't write anything. आराम से सुनिए. ठीक है, please listen. We have carbonyl carbon like this, C double bond O. And same thing, here we are having NH3. Ammonia has a lone pair on nitrogen atom. Nitrogen atom is going to attack on the carbon atom like this. Because again, delta negative, delta positive, this is electron rich to electron poor. And again, this pi bond is going to break as it was breaking in the previous case. Then we will get a new molecule like this. Carbon, the bond as it is, these two bonds are as it is. It has a new bond with NH3. It has a new bond with NH3 like this. No need to write. If you are going to write, you will not understand. There will be a oxygen atom with a negative charge here. Clear as आपको? Now let us look at the hydrogen which are connected to nitrogen. अच्छा, एक और चीज यहाँ देखिएगा. Nitrogen is neutral, and because it is giving both the electrons to carbon to form a bond. Now nitrogen has 4 bonds. It will get a positive charge because it is giving 2 electrons to carbon atom. It is losing electron now. Where in covalent bond you have to have 1 electron from carbon, the other electron should be coming from nitrogen. But here both the electrons are coming from nitrogen. That is why nitrogen is going to get a positive charge. क्योंकि वो 1 electron दे रहा है carbon. ठीक है? Now please see what is going to happen. Now here all the hydrogen atoms are connected with nitrogen. Nitrogen is more electronegative, so it will pull electron density from each of the hydrogen atoms, making each of the hydrogen atom delta positive, and delta positive. Now one of these hydrogen will be very near to the O negative. O negative को बाहर से किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है. O negative will quickly, see, obviously घर के अंदर ही अगर कोई सामान तो वही इस्तेमाल होगा ना. So in the same molecule there will be an intramolecular reaction like this. Oxygen will say hydrogen with delta positive charge, it will attack on this hydrogen atom. The hydrogen which is having a bond with nitrogen atom, it will give the electron density like this to the nitrogen atom. Is this clear? Yes or no? Please tell me. देखिए, oxygen Yes. is attacking hydrogen. Oxygen is attacking hydrogen. That means oxygen wants to make a bond with hydrogen. Now hydrogen will say, अच्छा, oxygen हमको इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा या खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो? बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना? सही कि नहीं चाहिए? To make Yes, bond, sir. we need electrons, right? So hydrogen will say, are you coming up with some electrons? So oxygen will say, yeah, I have negative charge. I have plenty of electrons. So hydrogen will say, ठीक है भाई, हम फिर nitrogen को electron दे देते. Nitrogen is having positive charge. It will get the electron. It will get neutralized. एक point बहुत आसानी से समझिए, ठीक है? Then you will have carbon. Here you will have OH, oxygen, and 1 hydrogen. Here there will be nitrogen atom with 2 hydrogen like this. Now these hydrogen will still have delta positive because they are connected with nitrogen. उनको तो सुकून नहीं है ना. Nitrogen is still pulling the electrons because nitrogen is electronegative. When nitrogen is more electronegative, it will pull the electrons from hydrogen atom, making it delta positive. And oxygen also cannot do anything because oxygen is having lone pair electrons. As you can see, it will have 2 lone pair electrons, right? And when it has 2 lone pair electrons, these electron density. Now electron cannot sit in a place. Electron will go where there is less electron density. So again, from higher electron density to lower electron density, there will be a attack like this. Hydrogen will say, okay, fine. Oxygen, are you coming with your own electron? Oxygen will say, I have lone pair electrons, don't worry. So hydrogen will say, okay, fine. Then I will give the electron density to nitrogen atom. So nitrogen बोलेगा, मेरे पास क्या? आप तो bond बनाएंगे हम. I will make a bond with carbon atom. So hydrogen, while it was giving the electron density to carbon and nitrogen to form a bond, carbon will say, I already have 4 bonds. Can you not see? Then nitrogen will say, okay, fine. देखिए, oxygen is taking a hydrogen atom. हम बीच का एक आपको structure बना रहे हैं जो exist नहीं करता है, which does not exist actually. ठीक है? लेकिन आप देख लीजिए structure को. Carbon. This reaction, it is happening inside one molecule itself. That is why it is very fast. So nitrogen will be here with 1 hydrogen remaining. है ना? इसके पास एक hydrogen remaining रहेगा. नीचे हम बना देते 1 hydrogen remaining. Oxygen has taken both the
hydrogens. The oxygen has taken 2 hydrogens from the nitrogen atom. Now this oxygen will get a positive charge because it is having 2 hydrogen atoms. This nitrogen will get a negative charge because hydrogen ने nitrogen को दे दिया. आप ये मान लीजिए ना nitrogen को दे दिया, ठीक है ना? Nitrogen को दिया है. ऐसे slowly जैसे यहाँ पे हुआ था. Nitrogen को दिया था. Now as soon as oxygen gets a positive charge and it is having 2 hydrogen molecule, oxygen बोलेगा टाटा बाय बाय. पानी मिल गया. क्या मिल गया? पानी. So water is very stable. Water will be leaving like this. As soon as water will leave, with water is also taking electron from the carbon atom. So carbon will say nitrogen, you already have many electrons, you please make a bond with me. तो वही यही सेम चीज ना बहुत रैपिडली होगा. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहला, ऑक्सीजन अटैक्स हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन shifts the electron density towards carbon and nitrogen, and oxygen and carbon bond breaks. So this is the first step. This is the second step. This is the third step which is happening. And you can directly write. I mean, ये डायरेक्टली होता ही यही है. इसको मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये हमने समझाने के लिए बस लिखा था. You will write directly this one. You have carbon. The 2 bonds are as it is, doubly bonded with nitrogen, further attached with 1 hydrogen. This is the end product. And you will have minus H2O. Water is leaving from here. चलिए इसको इतना लिखिए, फिर हम आपको एक शॉर्ट देखिए. अगर आपको शॉर्टकट देखना है, देखिए see here what shortcut is happening. You have carbon, double bond oxygen plus NH3. I can write it in this way: H2, nitrogen, and H. When this is getting reacted, what is happening? This H2O molecule is leaving, and you can directly form carbon double bond N followed by H. ठीक है? Simply you have to remove water. You remove oxygen, you remove H2. Instead of oxygen, you will write NH. That is it. Please write it down. Let me know once you're done by raising your hand. Sophia, Aliza, Rajita, Deborah, Patil got disconnected. Deborah and Fia, raise your hand once you're done. Fia, आपने लिख लिया? Done ना? ठीक है. देखिए तो in general अब हम लोग क्या लिखेंगे? See here guys, this is very important. बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए. In ammonia or ammonia derivatives, you will see something like this. Carbon, double bond O, plus you will have H2 bonded to nitrogen, and there will be some Z. ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? There will be some Z here,
and आपके reaction में you will have carbon double bond nitrogen as it is bonded to Z. If I talk about ammonia, देखिए I'm writing here things. I'm writing here number one, the agent. You will identify the Z and then you will identify the product. ठीक है? So for example, if the reagent was number one, we saw NH3. So in NH3, what was the Z? Hydrogen. दिखा सबको? This Z is what? Hydrogen ना in NH3. Aliza, Yes, Safiya, sir. दिख रहा है ना? ठीक है? This is hydrogen. Product क्या हो जाएगा? Carbon double bond nitrogen as it is. बस यहाँ पे आपको Z की जगह क्या लगा देना? यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है? See here. Don't worry. अगर नहीं आया तो फिर देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए. You have here, let us suppose NH2OH. NH2H, ध्यान से देखिएगा. H2 दिखाया. All of you saw H2, yes or no? Please tell me. NH2OH sir. में H2 दिख गया सबको. What about Aliza? हाँ, Aliza, Fia, H2 दिखा. नाइट्रोजन दिख गया. नाइट्रोजन दिख गया. What is the Z now? Tell me. बचा क्या? क्या बचा? हाँ, OH बच गया. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कार्बन पे दो ग्रुप्स एज इट इज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्डेड टू Z क्या है यहाँ पे? OH, तो यहाँ पे OH लग जाएगा. अंडरस्टूड हाउ टू राइट द प्रोडक्ट? हाँ या ना? सफिया, अलीजा, फिया, डेबोरा. गॉट इट ना? ठीक है. चलिए, आई एम राइटिंग द रिएजेंट्स. इसको लिख लीजिए आप. कितना लिखिए कम से कम? आई एम राइटिंग द रिएजेंट्स नाउ. Also give a space, है ना? Because I have to write the name of the product here. So one, and then you will have a space, then second, then have a space. Okay? एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा. After NH2H, please write NH2, NH2. Right, NH2. कितना दे आपको? Should I give you 5 minutes? 5 minutes you will write all the products. ठीक है, इसको ना, इसको याद से पेंसिल से लिख लीजिएगा. ठीक है ना? डोंट राइट एवरीथिंग विद पेन. लाइक Z एंड एवरीथिंग, डोंट राइट विद पेन. अगर गलती हुई तो फिर हम बताएंगे ना. 5 मिनट काफी होगा? 5 minutes, गाइस, टेल मी. 5 minutes. अलीजा, सफिया, 5 मिनट. ठीक है? ठीक है, चलिए. 5 मिनट आराम से. ठीक है.
You guys have 2 more minutes. Guys, tell me. लिख लिया सबने? सफिया, अलीजा? अच्छा ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. मेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम. पेंसिल से क्या है ना. हाँ, क्या हो गया? Just a second. अलीजा, सेकंड वाले में आपने क्या किया? प्रोडक्ट देखिए. जेड तो जेड आपका ठीक है, प्रोडक्ट में आपने क्या कर दिया है? समझ में आया? I forgot to write H. एच नहीं यार, NH2 है ना. NH2 Hmm. होगा ना, OH तो ही ना होगा. Sir, where? जेड सेकंड नंबर में. Oh, yeah. Sorry. गॉट इट? ठीक है. Yes, sir. NH2. और हाँ, NH2 हटा दीजिए. इधर से भी आपने NH2 हटा दिया, NH2 यहाँ से भी आपने हटा दिया. ठीक है. और अरे बी नहीं है, वो आर है. हमने बी लिख दिया क्या? अरे ये आर है, आर. बी क्या होता है? बी कुछ तो ही ना होता है. दिस इज आर, माय बैड गाइस. ये आर है, RNH2. ठीक है. और कुछ लोगों ने भेजा है, तो देखते हैं. ओके, एवरीवन हैज सेंट. पिया ने भेज दिया. पिया कैसे देखिए हम एक्चुअली. हाइड्रोजन OH, यहाँ पे NH2, तो NH2 ठीक है. वेरी गुड. पिया आपका सही है. नो नीड टू इरेज एनीथिंग, एवरीथिंग इज करेक्ट. सब सही है ना? एक बार हमको कंफर्म करने दीजिए. डबल बॉन्ड सही. ठीक है. देन वी हैव डेबोरा. थोड़ा ना डेबोरा, आप ना वो सही से जरा फोटो भेजिए. आई एम लुकिंग एट माई. अच्छा चलिए ठीक है, हम फोन में देख लेते हैं भाई. ऐसे आप लोग आढ़ा टेढ़ा भेजते हैं यार. कुछ तो मेरा ख्याल कर लिया करें आप लोग. सीधा सीधा फोटो भेजा करें. ऐसे देखना पड़ रहा है ऐसे. अब वही हम सोचिए स्क्रीन में कैसे देखते हैं. डेबोरा ZH होगा. ठीक है. फिर OH होगा. फिर NH2 होगा ना डेबोरा. थर्ड वाले में देखिए, आपने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया. Z यू हैव आइडेंटिफाइड करेक्टली. देन अगेन Z आपका सही नहीं है. ठीक है डेबोरा, यू हैव टू डू सम करेक्शंस. वो हम बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा. आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट सम आइडिया हाउ टू डू इट, बट उतनी क्लैरिटी आपको नहीं आ पाई है. ठीक है. Who is the next one? सफिया. सफिया आपके इसमें NH3OH. ठीक है. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड N NH2 ठीक है. NH2 ठीक है. डेबोरा एवरीथिंग इज करेक्ट. थोड़ा सा उसको ठीक से लिख देंगे तो हो जाएगा. रजिता ने भी ऐसे उल्टा सीधा किया.
रजिता बेंजीन को तोड़ के आपने अलग रख दिया। बेंजीन तोड़ के भाई ऐसा बनाइए आप, कैसे चलेगा? बेंजीन है, आधा NH इधर लिखा है, NH2 कुछ भी कहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आपको स्पेस का आइडिया नहीं रहा ना कि इतना बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूल सब। अच्छा दूसरी चीज एक बात बताइए, मार्जिन के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 लिखना चाहिए था ना? यस रचिता, you should write, see where you have written 1 2 3 4 in your notebook. मेरे स्क्रीन पे No. क्या देख रहे हैं आप? Yes, sir. That's just that it's a rough note, right? So when I'm writing it fastly, I just write it accordingly to. ये रफ है आपका, फिर फेयर करेंगे आप इसका? I'm sorry, what were you saying? You're going to fair it once again in a different No. notebook. No, No, I'm na? not going to. No, I'm not. Okay. It's fine, Rajita, but I think that you're right. No, ठीक है, sir, करने को I didn't realize I was going to send it to you. Otherwise, I would have wrote it more neatly. Like, I No, understand no. what I did. No. अंडरस्टैंड की बात ही नहीं है ना। सी दिस वन यू हैव, आपने गलत ही लिख दिया है इसको। ये देखिए फिफ्थ वाला, The Z would be NH and then the benzene नो यू along. हैव रिटन द, दिस इज ओनली रॉन्ग ना, आपने NO2 को यहाँ पे अटैच कर दिया है। देखिए जरा, I see. कैन यू सी दैट? Yes. है ना? तो Hmm. आई मीन ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, अदरवाइज इट इज फाइन। चलिए और तो किसी का नहीं, आई होप। Let us start writing, ठीक है। So here the Z will be NH2, the product will be carbon double bond N। डेबोरा ध्यान से देखिए, what is the Z? Z will be attached here ना, तो Z होगा आपके पास NH2 अटैच हो जाएगा बस। यहाँ से आप NH2 निकाल दीजिए, the Z will be NH which is bonded to, if you don't want to write benzene आप लिखिएगा PH, ठीक है। बेंजीन का पुराना नाम है फीन, we represent benzene by PH, writing what? PH, or what else you can write? You can write C6H5, carbon double bond N bonded to C6H5, this is also valid। I have written each and everything। Now please remember, यहाँ पे मत लिखिएगा PH, because here we don't have PH, we have NO2 and NO2 also, ठीक है। That is why for this one you have to write everything। You will write NH followed by the benzene ring with NO2 here in the para position and NO2 here in the ortho position, NO2 like this। Now the product is going to be carbon with a double bond as it is, N as it is, followed by NH, followed by the benzene ring with NO2 here and NO2 in the ortho position like this। Got it guys? Yes or no, please tell me। After that again you have this NH2 will be here like this, so you will have NH, the single bond carbon double bond O, followed by NH2. Here also you will have carbon double bond N as it is, as we had, the Z is NH bonded to carbon double bond O, followed by NH2. Here the Z is alkyl group, that is R. R is any alkyl group, CH3, C2H5, any alkyl group. You'll have carbon double bond N followed by R. All of you got this? Yes or no, please? If you have difficulty Yes, in understanding any one of them also, please let me know। Then I will write the names here। So this reagent is ammonia। पहले reagent के नाम लिख दें, काम कभी-कभी नहीं करता है। अमोनिया, ठीक है। Then this here is hydroxylamine। This here is hydrazine। This is phenylhydrazine। अच्छा यहाँ पे I need some space। स्पेस के लिए this is 2,4 dinitro phenyl
hydrazine. This is semi-carbazide, right? Semi-carbazide. Semi-carbazide. This is amine. Okay, the product here that we have got, it is known as imine. This is known as hydroxylamine. Oxime. This here will be known as hydrazone. This will be known as phenylhydrazone. This is 2,4 dinitro phenylhydrazone. अच्छा, इस वाले रिएजेंट को ना इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं. दिस रिएजेंट इज आल्सो नोन एज इन ब्रैकेट लाइक 2,4-DNP. 2,4 dinitro phenylhydrazone है ना. दिस इज सेमी कार्बाजोन. अलीजा, कहाँ ध्यान है आपका? क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप अलीजा, और कौन क्या कर रहे हैं? Nothing, sir. नथिंग क्या? अब ध्यान दीजिए क्लास में. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन. सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और इट इज आल्सो नोन एज स्किप्स बेस. बातें कर रहे हैं आप बैठ के वहां पे. अलीजा, चलिए छापिए, जल्दी छापिए. पिया, आपकी तबीयत सही है? आज बहुत कम बोल रहे हैं आप. यस पिया. So, can I repeat? आर यू ओके? आर यू फीलिंग वेल? Yes, sir. अच्छा, हमको लगा एग्जाम की वजह से ज्यादा कुछ प्रेशर में है आप. कल किसका एग्जाम है? किसका है एग्जाम बताइए तो. यस सर. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको सही से? या am I audible properly? Yes, sir, you are audible. टेल मी, कल किसका एग्जाम है? It is starting with the optional subjects, sir. I took like home science instead of Home math. science. Okay, so what you have to do in home science? We have to study, sir. You have to study home. No, it seems like other subjects. It will have so much of things. हाँ, तो what do you study in home science? वही तो पूछ रहे हैं. What do you It study is, in home? it is based on nutrition. It's based on services, It programs, is based. plans. Okay, fine. ठीक है. आपकी आवाज, I mean your voice is not audible very well. ठीक है, fine. I understand what is saying. So what are the three major nutrient macronutrients? Tell me. What are the three macronutrients? Macro. No idea. Pia? Yes, sir. You are talking in home science. You study about nutrition, right? Yes, sir. But last year I studied. Last year you studied nutrition. अच्छा, ठीक. So last year studied. तो फिर बताइए. What are the three macronutrients? भूल गए. कोई बात नहीं. Carbohydrates, Carbohydrate and proteins, protein and one more. and Anyone else? Fats. किसी को पता है? fats. Fats. हाँ. Sir, can you show Fats. the last to last year. आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से. the name नहीं of आ the रही. last one? Can I just show?
नहीं होती, सॉरी आपको लग, ठीक ठीक, देखिए देखिए, लिख लिया लीजा आपने? अलीजा Yes, लिखा आपने या yes, नहीं sir. लिखा? Yes, sir, लिख लिया. हाँ, ओके, Done, sir. डन, ठीक है. Write a remark. This is regarding 2,4 DNP. Please write. 2,4 DNP on reaction with aldehyde and ketones it will give you a PPT. That color of PPT can be yellow to red, yellow भी हो सकता है, और orange depending on the type of aldehyde and ketone, or red. ठीक है? So what you are having, if you have 2,4 DNP, you react it with aldehyde and ketone, you will get a PPT. ठीक है? Therefore, it can be used for detection of aldehyde and ketones. That means if you have a substance A and you react this with 2,4 DNP, ठीक है? You have a substance A and you react this with 2,4 DNP and it gives you yellow, orange, or red PPT, then this A will be aldehyde or ketone. समझ में आई सबको? If there is a substance which reacts with 2,4 DNP and gives yellow, orange, or red PPT, then that substance will be what? Aldehyde or ketone. अरे भाई लिखने से पहले समझ में आया नहीं आया? अलीजा, हाँ ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, छाप लिए? छापे कि नहीं छापे? जल्दी बताइए, छाप लिए? डन? Done writing? Aliza, Safia, Rachita, Fia, Deborah. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इधर देखिए सर. Now, if you remember semicarbazide has two NH2. NH2, this is the next point. Please write, see here. NH2, NH, C double bond O, and then you have again one NH. है ना? Sorry, NH2. Now, both these NH2 will have lone pair electrons. है ना? Now, either this is going to attack on the carbonyl carbon, या फिर ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे. But the attack happens only from this NH2. Why is that? है ना? In NCERT there is a question that has been asked in your exams also. Why is only one NH2 group able to attack in semicarbazide? The reason is, if you look at the lone pair, see, we should have nucleophile, है ना? We should have nucleophile. Nucleophile is electron rich. Electron rich कैसे होगा? Until unless it has lone pair. If you see this lone pair and you compare this lone pair is not localized, it is moving around because of resonance. NH2 single bond NH, single bond carbon. Here you will have O negative and then double bond NH2. अब कहाँ गया? अब इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं. Lone pair is in resonance, so lone pair is delocalized. Lone pair is what? It is delocalized. That is why it cannot attack on the carbonyl carbon. ठीक है? So they will ask you why only one NH2 group is able to attack. You will write because the other NH2 group is in resonance with कार्बोनिल या फिर सी डबल बॉन्ड. ठीक है? दूसरे हिसाब से आपसे ये पूछ सकते हैं ना, दिस इज अमाइड ग्रुप, इसको सी डबल बॉन्ड हो NH2 अगर याद हो, इसको अमाइड ग्रुप बोलते हैं. सो दे विल आस्क why the NH2 of amide group does not attack on the does not act as nucleophile.
that does not attack on the carbonyl carbon, इस तरह की अगर wording use करे, then you will say because the other की जगह लिख दीजिएगा because the NH2 of amide group. समझ में आ गई? ये क्या है? ये amide group है ना, this is amide group ना. So if they ask you the NH2 of amide group does not act as nucleophile Y, or they can ask you the NH2 of amide group does not attack on the carbonyl carbon Y, you will say because the NH2 group of the NH2 of amide group is in resonance with C double bond. कर लेंगे ना इतना हेर फेर? नहीं कर पाइएगा Yes, रचिता, ऐसे ना क्या बोल रहे हैं, नहीं कर पाइएगा. No, so that's a yes. That's ये yes है, ये Both are yes. both are yes. ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल हम बढ़िया से बना दे रहे हैं. अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना लिखने के बारे में, कई बार ऐसा होता है ना कि आप मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग लेकिन आपको वर्ड्स याद नहीं आते कैसे लिखना है, तो आप बस ऐसे कर दीजिएगा. ये आपने बना लिया ऐसे, यहाँ पे दिया लोन पेयर, यहाँ पे दिया लोन पेयर, ठीक है. इसमें ऐसे सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है. इसको बता दीजिएगा डज नॉट रिएक्ट ड्यू टू delocalization of lone pair and resonance. ठीक है. उसके बाद अब बढ़िया से एक यहाँ पे इसमें बना दीजिएगा. You will draw it like this and you will write this NH2 reacts as the lone pair is localized. ठीक है. If you know something, आप you can write anything. आप मतलब अगर आपको पता है ना क्या हो रहा है, then you can write whatever way you want. CBSE will give you marks. ठीक है. Don't worry about it. Let us suppose अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है, so you will make the diagram. This one does not react, this one reacts. इतना लिखिए बस काफी हो जाएगा. इतना क्लियर है सबको? हाँ या जल्दी बताएं. yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा सेक्शन है, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं, then we will move on to another reaction. In this we are going to learn about the reactivity of, please don't write anything, ठीक है ना. हम लोग क्या समझेंगे? Reactivity of aldehyde and ketones towards nucleophilic addition reaction. ठीक है. ध्यान से देखिए. Aldehyde, I will compare aldehyde and ketones. So first of all, we'll take aldehyde. हमने लिया aldehyde और हमने लिया कीटोन. ठीक है. Easy. The structure of aldehyde is you will have R, any alkyl group connected to carbon, double bond O, and then connected to hydrogen. Ketone R connected to carbonyl carbon and another alkyl group, some R dash. Clear है सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं. ठीक है. Yes. अगली चीज देखिए. The nucleophile will be present, right? Nucleophile will be present. A nucleophile will react with aldehyde and ketone. Why it will react with aldehyde and ketone? Because carbon is having delta positive charge here and delta positive charge here also. है ना? यही तो reason है for the attack. Nucleophile is going to attack on, or it will react with the carbonyl carbon. Now let us see. जहां delta positive ज्यादा, wherever the carbon is electron poor, there the nucleophile will attack easily. Correct है guys? If we have more delta positive, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा. yes or no? सही है? अरे बोलो भाई. नहीं, क्या ख्याल है? नहीं आया समझ में? सफिया, अलीजा, फिया, नहीं आया समझ में? ऊपर से गया. जल्दी बताइए, जल्दी. नहीं आया. नहीं आया.
अरे बोलो तो, आगे सर आगे क्या आया बताओ अलीजा। कि जिधर आपने एक चीज बोली थी, जिधर वो ज्यादा होगा उधर वो अटैक करेगा। वो ज्यादा होगा तो वो अटैक करेगा, कौन ज्यादा होगा तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किधर अटैक करेगा? किधर ज्यादा क्या होना चाहिए? किधर अटैक करेगा? जहां पे वो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव तो क्या ज्यादा होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, बस समझ में आ गई सबको, सफिया रजिता, राइट ना? Yes. So nucleophile will attack where we have more electron poor, है ना, more electronically poor. Now if you look at the carbon atoms in aldehyde and ketone, see ketone will have carbon delta positive, but this carbon is also attached with alkyl groups. So these two alkyl groups are electron donating plus I effect, so they will give electron density towards the carbon atom. क्या देंगे ये? electron density. What will they give? Tell me guys, क्या देंगे? They will give, बोलो, अरे बोलो भाई, alkyl groups are plus I, so they will give electron density to, So can you repeat your question? ठीक है, ये बोलिए ना कम से कम, कैन यू रिपीट इट एटलीस्ट, अगर समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन प्लस आई माइनस आई, कुछ याद है आप लोगों को? प्लस आई माइनस आई याद है? सफिया, अलीजा, ऐसे तो कुछ तो बोलो भाई, याद है नहीं याद है? अलीजा, सर अच्छे से नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। प्लस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, क्या रखें? विच विल गिव इलेक्ट्रॉन, क्या देगा वो? प्लस आई मतलब इट विल गिव इलेक्ट्रॉन। Give will give electrons. will give electrons, ठीक है। And carbon atom, since they are very less electronegative, carbon atom electron लेने की क्षमता नहीं रखता, carbon atom it gives electron. All the alkyl groups they will give electrons, है ना? Alkyl groups, for example CH3, it is made with what? Carbon and hydrogen. Both of them are very less electronegative, तो दोनों ही क्या करेंगे? Electron density Give देंगे, electrons. ठीक है? They will give electrons. So these alkyl groups they are also going to do what? They are also going to give electron. क्या देंगे? Tell me guys. इलेक्ट्रॉन देंगे। आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, एंड दोनों तरफ से क्या मिल रहा है इसको बताइए? दोनों तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, सही है? Yes, इधर से sir. ही मिल रहा है, इधर से ही मिल रहा है। अरे अलीजा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताइए। यस सर यस सर। ठीक है, इफ इट इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, बिकॉज इसको तो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव को नेगेटिव मिल रहा है, तो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम, दिखा सबको, है ना? बट इन एल्डिहाइड इट इज गेटिंग द इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, ओनली फ्रॉम वन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी जितनी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन उतना नहीं कम हो जाएगा जितना कहाँ पे हो रहा है, कीटोन में हो रहा था, ठीक है? कितनी बात समझ में आई? Yes, ठीक sir. है। इफ आई टॉक अबाउट दी कार्बोनिल कार्बन, तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली पुअर, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है? सो हियर आई विल राइट, प्लीज डोंट राइट, आप लोग अभी मत लिखिएगा, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन is more electron deficient, ठीक है? Here we will write carbonyl carbon is less electron deficient. अरे मत लिखो लीजा, नहीं लिखी अभी, due to two alkyl groups, ठीक है? ड्यू टू, अब लिख सकते हैं ड्यू टू ओनली वन alkyl group, ठीक है? अब अगली चीज आते हैं, सुनिए। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है? हियर आई हैव, अच्छा आर जो होगा फॉर एग्जांपल, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? CH3, है ना? अब एक बात समझिए, कार्बन और यहाँ पे ऐसे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ये ग्रुप भले ही आप CH3 लिख दिया करें, बट दिस ग्रुप इज वेरी लार्ज ग्रुप, राइट? You have 4 atoms ना, कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, देयर आर 4 atoms, करेक्ट है? अब एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन एल्डिहाइड, यहाँ पे उसको मिलेगा सिर्फ एक एल्काइल,
but when it will attack ketone, it will have two alkyl groups. So attacking on the middle carbon, the carbonyl carbon will be very difficult in the case of ketone because यहाँ पे दो बड़े ग्रुप है. दिखा सबको? Aliza, Sophia, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. That is what will happen since nucleophile, यहाँ पे जो nucleophile है आपके पास, this when attacks on the ketone carbon, it will face more hindrance. ज्यादा बैरियर वहां पे लगेगा, more steric hindrance. That is why what will happen, दोनों ही केसेस की वजह से it will be slower attack on the ketonic carbon. ठीक है, कीटोन वाले केस में स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लेस. पहला वाला रीजन की वजह से भी एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव. न्यूक्लियोफाइल विल इजीली अप्रोच द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ व्हाट, मोर बैरियर्स हियर. तो आसानी से अटैक अभी भी कहाँ होगा, एल्डिहाइड में. ड्यू टू द अबव टू रीजंस वी कैन से देयरफॉर aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction due to the above reasons. बात समझ में आएगी सबको? ठीक है. Yes, sir. Another thing I can write, reactivity towards, आपको हम लिखने का टाइम देंगे, डोंट वरी. reactivity towards nucleophilic addition reaction, it is inversely proportional to number of alkyl groups. ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप, यानी कि जितना, एक तो आपके पास अगर दो एल्काइल ग्रुप तो कीटोन हो गया, तो उस टाइम एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन कर दीजिएगा. बट इफ यू हैव टू डिफरेंट कीटोन्स तो आप वहां पे एल्काइल चेन में देखिएगा. फॉर एग्जांपल, अगर बात हो आपके पास 1 2 3 CH, ठीक है, दूसरा आपके पास 1 2 3 कीटोन, तीसरा आपके पास 1 2 3 4 कीटोन. ठीक है ना, इस केस में इफ आई कंपेयर A एंड B, तो एल्डिहाइड का ज्यादा है ना, अरे हाँ है ना. और बी Yes, और sir. सी में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास 1 CH3 1 CH3, यहाँ पे आपके पास CH3 और इधर एक बड़ा ग्रुप. तो बी और सी में आपके पास बी विल बी मोर रिएक्टिव. समझ में आई बात? Yes. कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना. अलीजा, सफिया, ऑल ऑफ प्लीज टेल मी. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बस याद रखिएगा इसको. चलिए इसको छापिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, है ना.
डन एवरीवन, इसलिए सबने एक छोटा सा रिएक्शन है उसको लिख लीजिए, फिर उसका हम लोग खत्म करते हैं, ठीक ना। We have seen reaction with ammonia and ammonia derivatives. उसके बाद अगला लिखिए आपको reaction with HCN. Second, HCN क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले फॉर्म्स cyanohydrin, फॉर्म्स cyanohydrin, ठीक है। देख लीजिए रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड O, टू ग्रुप्स एज इट इज। इट फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा देखिए HCN का ना सबसे पहले एक रिएक्शन करा देंगे with NaOH or any KOH or BaOH whole twice, any base OH negative के साथ। So here you will get what? Cn negative plus आपको मिलेगा H2O, ठीक है। So this is acid base reaction, Cn negative plus H2O. Now I will have my carbonyl compound like this. Acid, carbon double bond O plus I will have Cn negative. This Cn negative will attack on the carbonyl carbon. This oxygen will be taking the bond carbon 2 bond as it is. Here you will have Cn singly bonded with O negative. After this, O negative will get in hydrogen from this HCN. So you will get H plus. H plus say oxygen will attack here and you will get carbon, the 2 bond as it is. Here you will have Cn and here you will have OH. This is cyanohydrin. So if you have CH3CHO plus HCN in the presence of OH negative, a particular base, you will have carbon, ऐसे बना दीजिए। कार्बन के पास क्या था? CH3, तो CH3 लिख दीजिए। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन लिख दीजिए। ऑक्सीजन का OH और HCN का CN। Similarly, if you have propanone plus HCN in the presence of OH negative, ऐसे बना दीजिए। कार्बन 1 2 3 4, this will be CH3, here also CH3, these two were present already, oxygen का OH, CN से HCN से CN. All of you got this? No? कर लेंगे? अलीजा, सफिया, रजिता, आसान है ना? चलिए, please write this down. Let me know once you're done. Sir, can you scroll up?